अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं इकोनॉमिक्स एकेडमी डॉक्टर मुखर्जी नगर ऑनसेल बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्राइस कंजम्पशन कर्व किस आकार का होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व किस आकार का होता है। प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं। प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं और प्राइस इफेक्ट के संदर्भ में चर्चा करते समय प्राइस इफेक्ट के सहारे डिमांड कर्व को कैसे डेराइव किया जा सकता है, ये एक सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है कि प्राइस इफेक्ट को कैसे ब्रेक करेंगे। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दो पक्ष है। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो प्राइस कंजम्पशन कर्व, प्राइस इफेक्ट और इससे निकलने वाले डिमांड कर्व पर चर्चा करेंगे। प्राइस कंजम्पशन कर्व को हिंदी में कहेंगे कीमत उपभोग रेखा। प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग रेखा। हम लोग अब तक जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो प्राइस लाइन एक रहता है। ये प्राइस लाइन, अगर इस प्राइस लाइन में यहाँ पकड़े रहे और इधर घसका दें तो ये हो जाएगा px बाई पी वाई, ये हो जाएगा px 0 बाई पी वाई। पी वाई 0 नहीं, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पी वाई के ऊपर में एक बार दे देंगे। बार का मतलब हो गया कांस्टेंट। बार का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये पी एक्स 1 है, आई पी एक्स 0 हो गया, जिससे घट गया। पी एक्स 1 से छोटा है पी एक्स 0। पी एक्स 1 बाई पी वाई, इसको कहा जाएगा रिलेटिव प्राइस। क्या कहेंगे? रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस। और इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्राइस। इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्राइस। absolute price of x commodity। और पी वाई का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। पी वाई बार, क्या कहेंगे? पी वाई बार। बार, पी वाई बार का मतलब हो गया कांस्टेंट प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। यहाँ पर प्राइस लाइन है, कर्सर कैसे चला गया, कर्सर कैसे चला गया, कर्सर कैसे चला गया, कर्सर कैसे चला गया। तो ये जो कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो इधर जाएगा तो इसको कहा जाएगा पी एक्स फॉल्स। पी एक्स फॉल्स, पी वाई कॉन्स्टेंट। पी वाई कॉन्स्टेंट। इधर कहा जाएगा पी एक्स राइजेज। पी एक्स राइजेज, पी वाई कॉन्स्टेंट।
और इसको कहा जाएगा स्विंग। क्या कहा जाएगा? स्विंग। झूला में झूलते हैं ना, जी। तो झूला में ऊपर का जो कड़ी रहता है वो पकड़े रहता है, झूला जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, स्विंग करता था। तो उसी तरह से प्राइस लाइन क्या होगा? स्विंग करेगा। राइट साइड स्विंग करेगा तो एक्स का कीमत घट जाएगा, और लेफ्ट साइड स्विंग करेगा तो कम हो जाएगा, तो एक्स का कीमत बढ़ जाएगा। अरे घट जाएगा तो बोल ही दिया ना। राइट साइड स्विंग करेगा तो एक्स की कीमत घट जाएगी, लेफ्ट साइड स्विंग करेगा तो एक्स की कीमत बढ़ जाएगी। अब पी वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ ताला लगा हुआ है, हिल डोल नहीं रहा है, तो पी वाई इज कॉन्स्टेंट। तो प्राइस लाइन यहाँ हम लोग जो खींचे हैं, तो गौर से देखिए कि एक ही इंडिफरेंस कर्व को यहाँ सटाए और दूसरे इंडिफरेंस को थोड़ा नीचे सटाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम हो गया Q1, दूसरा इक्विलिब्रियम हो गया Q2। ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड हो गया। अब यहाँ से हिग्स का जो ओरिजिनल किताब है, ओरिजिनल किताब में यही चित्र बना हुआ है, और इसका नाम हो गया PCC। क्या नाम हो गया? PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व, शॉर्ट में क्या कहलाएगा? PCC। अब इसका एक नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए AB, और इसका नाम दे दीजिए AB0। 0 मतलब भाग गया, घट गया। और इधर दे दीजिए Y कमोडिटी, और यहाँ दे दीजिए X कमोडिटी। अब गौर से देखिए, यहाँ पर वो 10x खरीदता है और 20y खरीदता है। यहाँ जब आता है वो, तो यहाँ वो 10x के बजाय 25x खरीदता है, क्योंकि प्राइस घट गया। प्राइस क्या हो गया? घट गया। और इसी चीज को हम लोग इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे। और इस पर प्राइस दे देंगे PX0 प्राइस, PY1 PX1। Y का कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि PY जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो PX हो गया। अब यहाँ 10 है और 25 है, तो मान लीजिए इतना 10 हुआ तो इतना 20 होगा, इतना 30 होगा। 10, 20, 30 ये एक्सिस बना दिए। अब हम लोगों का है कि ये 10 वाला नीचे उतार दीजिए, 10, 20, 30, और दूसरा ये कितना है? 25 है, ये उतार दीजिए, तो ये हो गया 25x, और ये हो गया 10x। तो 10x को कनेक्ट कीजिएगा किससे? इस पॉइंट से। इसको किससे कनेक्ट कीजिएगा? इस पॉइंट से। अब गौर से देखिए, ये एक रेखा बन गई किसकी? डिमांड कर्व बन गया। प्राइस लोअर हो रहा है तो डिमांड हायर हो रहा है ना? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है लोअर प्राइस हायर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, higher the demand, other things
remaining the same. है ना? मांग का नियम जो है यही है. जी. Lower the price, law of demand क्या है? Lower the price, higher demand. Higher the price, lower the demand. Other things remain the same. पूरी बात को बोलना, other things भी बोलना है. जी सर. यहाँ और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए. यही लॉ ऑफ डिमांड हो गया. तो ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया. ये जो यहाँ से यहाँ खरीदा 10 से बढ़ा के कितना किया? 25. इसी को कहा जाएगा प्राइस इफेक्ट. और प्राइस इफेक्ट को मापने वाले रेखा को कहा जाएगा PCC. चित्र समझ में आ गया? जी सर. इस चित्र देखने से क्या पता चलता है कि PCC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग जस्ट लाइक डिमांड कर्व. PCC curve of Hicks is downward sloping in a normal condition, normal commodity, and this can be transformed in the Marshallian form. This is Hicksian. This is given by whom? J.R. Hicks. J.R. Hicks. J.R. Hicks. J.R. Hicks. Lower the price, Higher the higher demand. the demand. This is in Marshallian sense. But in Hicksian sense, lower the price, higher the demand is shown by price effect. Law of demand is shown by price effect. And if price effect is measured by PCC, how can you define PCC? Price consumption curve. Price consumption curve is a curve which traces the effect of change in price upon quantity bought and upon quantity of X commodity bought. इंडिफरेंस कर्व के द्वारा प्राइस इफेक्ट को जब मापा जाता है तो उसको कहा जाता है PCC. उस कर्व को कहा जाता है PCC और उस प्रभाव को कहा जाता है प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट क्या बतलाता है कि PY अगर स्थिर है और PX घट गया तो उपभोक्ता Q बिंदु पर है, Q1 बिंदु पर है, इंडिफरेंस का फर्स्ट पर वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ? Q2 बिंदु पर, इंडिफरेंस का सेकंड पर. हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द यूटिलिटी. इन दैट वे ही गेट्स हायर यूटिलिटी लेवल. But because he shifts from lower indifference curve to higher difference curve. Before price change, consumer was on indifference curve 1 at point, which point? Q1. Why? Because price line is tangent to indifference curve at Q1. And at the tangent C, indifference curve is convex to the origin. So this is the two conditions of consumer's equilibrium. Now equilibrium shift from Q1 to Q2 because new price line is tangent to Q2 and tangent to indifference curve second. So consumer's equilibrium is at Q1, IC1, IC first, and at Q2 at IC second. First is lower condition of demand, second is higher condition of demand. And this proves that
lower the price, Higher the demand. higher the demand, other things remaining the same. That means price of Y remaining the Same. This is called price effect. J.R. Hicks has developed price effect without measurement of utility with the help of indifference curve. And therefore indifference curve was accepted in all parts of the world in economics class, that it is better tool than the cardinal utility analysis. This is consumers equal to two consumers equilibrium under ordinal utility analysis. We can say that indifference curve second has greater utility level than indifference curve first. First. Indifference curve second has greater level of utility than indifference curve Second. first. And indifference curve first has less utility than indifference curve Second. second. So this is level of measurement. Level is measured. One is higher, one is lower. IC first is lower, IC2 is higher. So this is called ordinal utility concept expressed by indifference curve, and this is measured in terms of price effect. Price effect is the basis of law of demand. What is law of demand? Other things remaining the same. Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the Higher demand. garden. In this case, price effect, we find that price of Y is constant and price of X falls. Demand for X increases. By which amount? 10 increased to 25. It means there is increment of 15. 15. This 15 increase in the demand for X is due to price effect. This is called price effect. If we will put the name like this, suppose we write this point M and this point T, then this area is MT and this area will be known as price effect. MT will be equal to price effect. MT will be equal to Price Price effect. price effect. Thus, we conclude that price effect curve, the price effect is measured by price consumption curve. And price consumption curve in a normal condition, downward sloping. But if the commodity is not normal, suppose salt. This salt is perfectly inelastic. So in this case, supply, in this case, PCC may be vertical, PCC may be horizontal, PCC may be backward sloping. That we will examine later on. Here we have completed and what is PCC, what is price effect. Price effect is the effect of change in price upon quantity purchased by the consumer in case of X commodity. X commodity price falls and Y commodity price is Constant. Constant. So in a normal case, PCC is downward sloping. If X and Y commodity are normal, then PCC is downward sloping. That's all.